Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava,
राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Ashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So in our previous session, we discussed about Lord Krishna's pastimes with his beautiful wives in Dwarka, the damsels of Dwarka. In the afternoon and in the day, Lord Krishna, he would spend his time with the Yadus, his father, mother, and other relatives, his sons, his grandsons, his cousins. But in the night, Krishna would display his wonderful pastimes with his beautiful wives, who were themselves goddess of fortune, Mother Lakshmi. They were all incarnations of goddess of fortunes. Now today we'll start with text 22, shloka number 22. Tasya evam ramamanasya samvatsaraganan bahun grihamedheshu yogeshu viraga samajayata. Tasya evam ramamanasya samvatsaraganan bahun grihamedheshu yogeshu viragah samajayata. Translation: the Lord was thus engaged in household life for many, many years, but at last his detachment from ephemeral sex life was fully manifested. Now you see what is Sri Uddhav is saying. So he's saying, Tasya evam ramamanasya. Raman means pleasure. So the Lord enjoyed his pastimes in Dwarka. Samvatsar. Vatsar means years. So Samavatsar means for many, many years, the Lord enjoyed his pastimes in Dwarka with his wives, with his relatives, with the Yadus. Ganan Bahun. Bahun means many, many people. They were part of the pastimes of Lord Krishna. Grihamedheshu yogeshu. And Grihamedheshu yogeshu means the Lord was a householder. He was performing all the duties of a householder. So Grihamedheshu yogeshu viragah samajayata. And after that, just to set an example for everyone, viraga, the Lord detached himself from everything. So you see, Krishna, he says in the Bhagavad Gita that Name Parthasti Kartavyam Trishu Lokeshu Kinchana Nanavaptam Avaptavyam Varta Evacha Karmani. That Name Parth Asti Kartavyam. Parth, there is no work which is prescribed for me
Name Parthasti Kartam Trishu Lokeshu. In all the three lokas combined together, there is no work which is prescribed for me. Nanavaptam Vaptyabhyam Varta Evacha Karmani. But still I am engaged in work. Why? Why? Although Krishna has nothing to do with this material creation, but still he is always engaged in his pastimes. He's unwinding he's displaying his beautiful pastimes. Somewhere he's unwinding his pastimes, somewhere he's playing his pastimes, somewhere he's becoming chariot driver of Arjun, somewhere he's displaying his pastimes as beautiful child in Vrindavan. So although Krishna has nothing to do with this material creation, but still why he is engaged in all such activities, like here we see in this shloka, he is displaying his pastimes just like an ordinary householder. Of course, he was never an ordinary householder, but that's how he has depicted his pastimes. It seemed as if he is playing part as a king of Dwarka, and as an ideal householder he's living. So why he's doing all this? Because that also Krishna says in the Bhagavad Gita. He talks about that also. That Arjun, if I don't work like that, then what will happen? If I don't work in this material world, then whole world will be put to ruination. Whole world will get ruined. You see? So Krishna is telling that if he does not work, उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदः संकरस्य चकर्तास्याम उपहन्यामि मह प्रजा. He says that I am the origin of everyone. From me, this whole material world has come about. So if I stop working, whole world will stop working. Whole world will be ruined. You see, as the supreme creator, it's his responsibility to give us knowledge about dharma, because dharmam to sakshat bhagavat pranitam. Only the Lord can enunciate what is dharma, what is religion. So, as the universal teacher of the whole world, Krishna, he's teaching everyone how to lead a household life, and how. It's not that whole life you have to remain a householder. No. It's not that whole life you remain attached to your family, your wife, your children. No. Viragah. The last sentence, the word is used, viragah. One has to become detached from everyone and become attached to Krishna. That is the purpose of detachment. It's not that, because a householder, he is very attached to his family, his people, his children, his wife. But it's not that whole life you have to act like that. No. So Krishna showed everyone that household life does not mean that whole life you have to remain attached to your family and your people. No. A time should come when you have to give up everything and begin your journey towards Krishna.
So Krishna, that's what he showed to everyone, that how he became, although he was playing his part like an ordinary householder, although he is the supreme personality of Godhead, but still he also showed everyone that how a person should not remain a householder throughout his life. One has to become detached also. Now, that does not mean that Krishna detached himself from his eternal associates like Rukmini Devi and other wives of Krishna. No, Krishna was always with them. Krishna is always with his devotees. Physically, he may not be present before everyone, but Krishna is always available for his devotees. So the wives of Krishna, they are Lakshmi Devi, they are goddesses of fortune. So Krishna detached from this material world, worldly affairs, but he always accepted the service of all his wives and his associates, transcendental associates like Uddhav, Sri Uddhav, Mahatma Vidur, the Pandavas. Krishna was always with them eternally. Krishna is always with us also, those who are pure devotees of Krishna eternally. So these acts of Lord Krishna are to teach us how to lead a life in with Krishna in the center of our life. Now text 23, shloka number 23. दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः. Translation: every living entity is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one therefore can put his faith in Lord Krishna's transcendental sense activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. Now you see, Daiva adhineshu kameshu. Daiva adhineshu. Adhin means those who are, Daiva means the energy of Krishna, Maya Devi. Adhineshu, those who are controlled by the energy of Krishna. Daiva adhina swayam pumar. And that person, all his senses are also under the control of this divine energy of Krishna. So, ko vishrambheta yogena. So, how will such people have vishrambheta? How such people will have surrenderance, faith in Krishna? Yogena, Yogeshwaram Anubrataha. They will never have faith on Krishna. They will never become good followers of Krishna. You see. So, ko vishrambhet yogena. They will never have faith on Krishna. Yogeshwaram Anubrataha. Only those who are Yogeshwaram Anubrataha. Those who are Anubrataha. Anubrata means those who are pure devotees. Anubrata means pure devotees. Only those who are pure devotees of Krishna, only they can have full faith in Krishna. Only they can understand the transcendental pastimes of Krishna. Krishna says that in the Bhagavad Gita, in the 4th chapter. Janma karma chame divyam evam yo vetti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjuna. That Arjun, Janma karma chame divyam. My birth and my activities are divyam, transcendental.
Evam yo vetti tatvatah. One who knows this in truth, tyaktva deham punarjanmaneti. After giving this body, giving up this body, he never takes birth again. Who never takes birth again? Who knows the pastimes of, who knows the position of Krishna. And who knows Krishna? So bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvataha. Only a devotee of mine, Krishna says in the Bhagavad Gita, only a person who is my pure devotee, he can know me in truth. Same thing is mentioned here. Same thing. What is mentioned in the Bhagavad Gita, same thing is mentioned here. That Yogeshwaram anubrataha ko vishrambeta yogina. How can a person who does not have faith on Krishna can know Krishna? Yogeshwaram anubrataha. Only those who are strict followers of Krishna, those who are pure devotees of Krishna, only they can know Krishna. You see? So only those who are pure devotees of Krishna can know Krishna, can understand Krishna's position, how he is the supreme personality of Godhead, how his activities are all transcendental, completely transcendental. So everyone in this material world is controlled by, here it is mentioned, Daiva Adhineshu. They are all controlled by Daiva. They are all controlled by the divine energy of Krishna, Maya. So, and here it is mentioned, Daivadhina Swayam Puman, and their senses are also controlled by Maya. So those who are controlled, you see, ordinarily what happens is, ordinary understanding of people is that Atmavat Manyate Jagat. If I am not free, I will think that no one can be free. So it so happened that there were three friends. So two friends were very successful. In school, they were together. And so two friends were good students. They were toppers of the class. And the third friend was not very good student in school. So then after school, they did not meet for a long time. And after a long time, they met each other, these two friends, the toppers. So they were looking for the third friend who was always a failure. So they always thought that he can never be successful. So they had a school reunion where many of their childhood friends, they assembled together. So they were talking about the third friend. So all of them, they said, well, I have seen your third one. He's now become very successful. He has become a Supreme Court judge. So these two friends who were toppers of the class, they could not believe. They said, no, I think you might have got mistaken. He might not be our third friend. He cannot become that successful. So another friend said, no, I have seen him. He was there in Supreme Court. His name was written there. So these two friends said, well, his name may be written there, but there are many people by his name in this world. So some other person's name might be there. They said, no. We saw the name and the surname also was there. So these two friends said, well, there may be many people with same name and same surname. So then one of their friends said, no, I have met him in the Supreme Court. He was sitting on the dais of the Supreme Court judge. They said, well, he might be there for some purpose, some acting class would be going on. So you see, these two friends are not ready to accept that how, he has become so special. So a person who is a fool, he thinks that everyone is a fool. So that is the meaning of Atmavat Manyate Jagat. So if a person, because all of us are controlled, so we think that everyone is controlled. They cannot imagine that Krishna is completely, he is controlling everyone and no one can control him. So these people, because they are controlled, they cannot imagine that Krishna is completely beyond this material creation. Everything is under his control and no one can control him. That they cannot realize, right? So
Even in dream, they cannot think of what Krishna, the wonderful pastimes of Krishna. Even in dream, they cannot imagine that these are true because they are completely in ignorance and they are completely controlled by Daivam, the divine energy of Krishna. So because they are controlled, they think that everyone is controlled. And even with Krishna, they think that Krishna is also controlled. But they don't know that he is the supreme controller. Right? So only by bhakti, only by devotion, only by devotional service to Krishna can one realize the position of Krishna, how he is the supreme personality of Godhead beyond all material dimensions and beyond all material designations. How he is the supreme, only pure devotees can know. So if a person is not a pure devotee, he cannot know even a fraction of Krishna's truth. He cannot understand even a fraction of the truth of Krishna, the truth about Krishna, the pastimes of Krishna. They can never know. So only a divine personality can understand divinity. Only a divine personality can understand Krishna. So that's what we see here. Now text 24, shloka number 24. पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदाः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदाः. Translation: Once upon a time, great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendants of the Yadu and Bhoj dynasties, and thus, as desired by the Lord, the sages cursed them. Now you see, very important shloka. So it is mentioned here, Puryam kadachit kridadbhir. Puryam kadachit. Puryam means long time back. Kadachit. Kadachit means long time back. Puryam means the city of Dwarka. So kridadbhir, playful activity. Krida means sporting activities or playful activities. Yadubhoj Kumara kahe. And who were playing, who were sporting, who are the people who were sporting there? So Yadubhoj Kumara kahe. The youngsters in the Yadu and Bhoj dynasty. The youngsters means the sons of Krishna, the Yadus, the people who were Yadus. Kopita Munaya Shepur. So while sporting, while playing, they Kopita, the sages, they angered the sages, the sons of Krishna, the Yadus, they angered some sages. Munaya Shepur. And Shepur means to curse. And in return, so they angered the sages. And in return, the sages cursed the Yadus, Krishna's relatives and friends. Bhagavan Mata Kovida. But it all happened by Bhagavan Mata. You see, Bhagavan Mata. It all happened by Bhagavan Mata means by the mat of Bhagavan. Mat means by the desire of Krishna. It all happened. Kovida. Krishna was cognizant of all these things. Krishna knew. So it all happened by Bhagavan Mata Kovida. Krishna knew. Because of Krishna's desire, it happened. Krishna desired that this is how the Yadus have to unwind their pastimes from earthly planet. You see? So, the Yadus who are
incarnations of either associates of Krishna in the spiritual world or they are incarnations of demigods. So, how can Yadus offend saintly people? Is it possible? No. The Yadus can never offend a saintly person. And even those who are saintly people in Dwarka, they were not ordinary people, they were pure devotees of Krishna. So, how they got offended? Even if the Yadus offended them, how can great saints get offended by them? Just like a matured personality, he does not get influenced by the activities of children, isn't it? So, those who are great sages, they generally don't get offended by the work of ordinary people, by the activities of ordinary people. They never get offended. So, first of all, it's impossible that Yadus could offend some saintly people because Yadus are the most pious people in the whole creation. So, how can they offend sages of Dwarka? Secondly, how can sages of Dwarka curse the Yadus? Right. So, here it is mentioned Bhagavan Mata Kovida. It all happened by the desire of Bhagavan Mata, by the desire of the Lord. Krishna desired that this is how it should happen. You see, nothing can happen without Krishna's desire. Everything in this world is controlled by Krishna. Sometimes people think, I have done this, you have done this, something else. Nothing can be done by us. Everything is desired by Krishna. Especially when it comes to pure devotees. Those who are not pure devotees, they are affected by their karmic reaction. But those who are pure devotees, they are completely under Krishna's control. Right? So, now these princes, the Yadus, no one could defeat them, no one could kill them. It was impossible for anyone to kill the Yadus. They were so powerful. They are themselves part and parcel of Krishna. They are themselves sons of Krishna or grandsons of Krishna. How can someone kill them? So, no one in this universe was capable of defeating or killing the Yadus. You see, impossible for even demigods to defeat or kill the Yadus. They were so powerful. But it all happened because of Krishna's desire. They were cursed by sages. So, why Krishna's desire? So, Krishna, so through this pastime, he wants to show to the world Krishna wanted to show to the world that these Yadus, who were not to be killed even by demigods, who were not defeated even by demigods or any human being, even such Yadus can be destroyed, or even such Yadus were subjected to the reactions of anger of pure devotees. Even Yadus were subjected to the anger of great devotees of the Lord. In fact, it is said that the most sinful activity, the most heinous crime in this world is to offend a pure devotee, to anger a pure devotee.
Even if sometimes someone offends Krishna, Krishna will tolerate. Just like he tolerated 100 offenses of Shishupal. But Krishna never tolerates offenses unto pure Vaishnavas or great devotees. So Krishna, through this pastime, he's trying to convey a message to everyone that even Yadus were not, even they were influenced or subjected to the anger of great devotees. Therefore, a person has to be very careful not to commit offenses at the lotus feet of a pure Vaishnava. Because a pure Vaishnava can save us from offenses unto Krishna. If we commit offenses at Krishna's lotus feet, a pure Vaishnava can save us. But if we offend a pure Vaishnava, who will save us? No one can save us. Right? So that is why a person has to be very careful not to offend or not to displease a pure devotee. One should always try to please great devotees of the Lord. Now text 25, shloka number 25. ततः कतिपयैर्मासैर् वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं समहृष्टा रथैर्देवविमोहिताः ततः कतिपयैर्मासैर् वृष्णिभोजान्धकादयः वयुः प्रभासं संपृष्टा रथैर्देवविमोहिताः. Translation: a few months passed, and then, bewildered by Krishna, all the descendants of Vrishni, Bhoj, and Andhaka, who were incarnations of demigods, went to Prabhas, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. You see, so now finally, Sri Uddhav, he is telling Mahatma Vidur how the Yadus, they unwinded their pastimes from earthly planet. So he's saying, Sri Uddhav ji, he's saying that Tatah Katipayar Masair. So Katipayar means some months. So after few months, Masair means months. So after few months, Vrishni Bhoja Andhaka Dayaha. So after they were cursed by sages, then what happened? After some months, Vrishni Bhoj Andhaka Dayaha. Vrishni Bhoj and Andhaka. So Vrishni. Vrishni means the descendants or the lineage of Krishna. Bhoja, Andhaka, they were all Yadus basically. So Yayo Prabhasam Samhrishta. So all these people, they went to Prabhas, a place of pilgrimage called Prabhas. Rathair Deva Vimohita. But Rathair Deva Vimohita, they all were riding on the chariot, and they were all influenced by Rathair Deva Vimohita. They were all influenced by the desire of Krishna. They were all influenced by the desire of Krishna. So being influenced by the desire of Krishna, they went to Prabhas Kshetra, because that was the place where the curse of these sages will be manifested and these Yadus will fight, and that's how they will
wind up their pastimes from this earthly planet by the desire of Lord Shri Krishna. It was Krishna's desire that these Yadus, they should go to Prabhas. So nothing can happen without Krishna's desire. Everything is under Krishna's control, especially when it comes to pure devotees. Pure devotees are completely under Krishna's control. So even if sometimes suffering is given to pure devotees, that is also under Krishna's control. Like Yadus here, they are being influenced, Krishna is desiring to kill them. Why? Because until they die, how will they go back to Krishna? And now no one can kill the Yadus. So out of Krishna's desire, they are being killed here. They are being cursed here. Even if they are cursed, that is also because of Krishna's desire. You see? So in the life of pure devotees, nothing can happen without Krishna's desire. Everything is controlled by Krishna. Everything. Even if they are suffering or they are enjoying or they are cursed or whatever is happening in their life, it is all completely controlled by Krishna. Sometimes people think Krishna is controlling everything means there will be no misery. No, there will be misery. Krishna gives misery to his pure devotees, but under his divine plan. Right? He gives miseries, but that is also his divine plan. Why he is giving misery? There is a reason to that. So everything is under his control. Rakhe Krishna mare ke, mare Krishna rakhe. Everything is controlled by Krishna, and all pure devotees, especially pure devotees in their life, nothing can happen without Krishna's desire. So that's what we are seeing here. You can like the video, you can comment. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Jaya Radha Madhavam Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनकी जो लीलाएं हैं द्वारका में अपने जो दिन का समय था वो अपने यदुवंश के जो लोग हैं यदुओं के साथ अपने पुत्र अपने पौत्र पोते अपने पिता अपने माता अपने सारे सगे संबंधियों के साथ कृष्णा बिताते थे। और रात्रि का जो समय था वो अपनी सुंदर पत्नियों के साथ कृष्णा अपनी बहुत ही सुंदर लीलाएं करते थे। और इस तरह से बहुत ही सुंदर कृष्णा की लीलाएं हुआ करती थी। अब आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे 22वें श्लोक से। 22वां श्लोक। तस्य एवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्य एवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। Translation. The Lord was thus engaged in household life for many years, but at last his detachment from ephemeral sex life was fully manifested. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। इस प्रकार भगवान ने अपने गृहस्थ जीवन को कई सालों तक उसका आनंद लिया और अंत में सभी के सामने उदाहरण तय करते हुए वो इससे विरक्त हो गए। अब आप देखिए कह रहे हैं तस्य एवं रममाणस्य। रमण रमण का मतलब होता है आनंद, प्लेजर। तो तस्य एवं रममाणस्य, तो कृष्णा ने बहुत ही रममाणस्य बहुत ही आनंद पूर्वक अपनी लीलाओं को किया। संवत्सर गणान बहून। संवत्सर, वत्सर का मतलब होता है सालों तक, तो कई सालों तक बहुत ही सुंदर अपनी लीलाओं को गृह मेधेषु, एक गृहस्थ जीवन अपना जिया। जिस प्रकार एक सभी गृहस्थ लोग अपना जीवन यापन अपने जीवन को चलाते हैं, इस तरह से कृष्णा ने अपने जीवन को बिताया। लेकिन विरागः समझ आया था, लेकिन अंत में विरक्ति मिली। अब आप देखिए भगवत गीता में, जैसा हम सब जानते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, कि हे पार्थ, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचना, इन तीनों लोकों में
कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जो मुझे करना है। मैं किसी भी कर्तव्य के द्वारा बंधा हुआ नहीं हूं। ठीक है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो इन तीनों लोकों में मैं किसी भी कर्म के द्वारा बंधा हुआ नहीं हूं। लेकिन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, लेकिन तब भी मैं कर्म करता रहता हूं। क्यों? उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजा। उत्सीदेयुरिमे लोका, कि अर्जुन, यदि मैंने कर्म करना बंद कर दिया, यदि मैंने कर्म करना छोड़ दिया, तो इस जगत की उत्पत्ति ही मुझसे हुई है, सब कुछ तो मुझसे ही है। तो यदि मैं ही कर्म करना त्याग दूंगा, तो फिर तो पूरा जगत ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान धर्म पुरुष है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान के मुख से निकला है। तो इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करना ये भगवान करते हैं, ये उनका दायित्व है। तो भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, और हमें, क्योंकि वो पूरे विश्व विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो पहले जगत गुरु हैं। तो उन्हें सबके सामने एक उदाहरण दिखाना होता है। तो कृष्ण भगवान गृहस्थ जीवन में एक साधारण गृहस्थ की तरह अपना जीवन को बिताया। हालांकि कुछ कोई भी क्रिया, कृष्णा की कोई भी क्रिया साधारण तो नहीं होती, लेकिन एक साधारण अ, गृहस्थ की तरह अपना जीवन, लोगों के ऐसा दिखता था कि वो साधारण गृहस्थ की तरह जीवन जी रहे हैं। और अंत में उन्होंने विरक्ति भी ले ली। जो यहाँ पे हम देखते हैं, अंतिम जो पंक्ति है उसमें विराग समझ आया था। विराग मतलब वैराग्य। विराग, राग का मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। विराग का मतलब डिटैचमेंट, अनासक्ति। तो वो अनासक्त भी हो गए, वैराग्य भी ले लिया, त्याग भी कर दिया सब कुछ। तो अब कृष्ण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्णा को किसी भी चीज से अनासक्त होने की या आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कर रहे हैं, क्यों? हम सब के सामने एक उदाहरण देने के लिए। कि गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे जीवन हम गृहस्थ बने रहें। नहीं, मनुष्य जीवन गृहस्थ बने रहने के लिए नहीं है कि पूरे जीवन बस घर परिवार, माँ बाप, बेटा भाई बहन, इसी सब में लगे रहें, पति पत्नी में नहीं। एक समय आता है जब हमें सब कुछ छोड़ के भगवान को समर्पित होना होता है। तो ये स्वयं कृष्णा अपनी लीला से बता रहे हैं, सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। लेकिन कृष्णा की विरक्ति का मतलब ये नहीं था कि कृष्णा अपने भक्तों से विरक्त हो गए, नहीं। रुक्मिणी देवी, जितनी भी कृष्णा की पत्नियां हैं, वो सब लक्ष्मी देवी के स्वरूप थे। सारी पत्नियां कृष्णा की लक्ष्मी माता की स्वरूप है। तो कृष्णा कभी अपने भक्तों से विरक्त नहीं होते, उनसे कभी अलग नहीं होते। भक्तों के साथ सदा हमेशा कृष्णा होते, चाहे वो पांडव हो, चाहे वो रुक्मिणी माता हो, जितनी भी कृष्णा की पत्नियां हो, वो सारी, उनके साथ कृष्णा हमेशा रहे। जगत से भले विरक्त हुए, उनके परिवार से विरक्त हुए, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों से कृष्णा कभी विरक्त नहीं होते। हमेशा, भले ही हमारे सामने कृष्णा नहीं दिखते हैं,
लेकिन हमेशा हमारे साथ शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, कभी उनसे विरक्त नहीं होते कृष्ण। तो इसीलिए सबके सामने एक सुंदर उदाहरण देने के लिए कृष्णा ने ये लीला की कि पूरे जीवन गृहस्थ जी रहना ये लक्ष्य नहीं है। एक समय आता है जब हमें सब कुछ छोड़ के भगवान को समर्पित होना पड़ता है। वो कृष्णा स्वयं अपनी लीलाओं से करते हुए दिखा रहे हैं। 23वां श्लोक। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। ट्रांसलेशन अनुवाद। Every living entity is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one, therefore, can put his faith in Lord Krishna's transcendental sense activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। सभी जीव कृष्णा की दैवी शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं और उनकी इंद्रिय तृप्ति भी उन्हीं के प्रभाव में होती है। इसीलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है उसे कभी भी कृष्णा पे पूर्ण श्रद्धा नहीं हो सकती। अब आप देख, दैवाधीनेषु कामेषु, दैव अधीनेषु, दैव अधीनेषु, अधीन होना। दैव का मतलब कृष्णा, उनकी दैवी शक्ति, माया शक्ति। तो अधीनेषु कामेषु, तो जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में वो सभी कृष्णा की दैवी शक्ति से प्रभावित है, उनके द्वारा संचालित है, कंट्रोल्ड है। तो दैवाधीन स्वयं पुमान, और दैव अधीन, और उनकी जितनी भी इंद्रिय विषय वस्तु हैं वो भी दैव यानी भगवान की ही शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड है, संचालित है। तो को विश्रम्भित योगेन, इसीलिए उन लोगों के लिए विश्रम्भित, कृष्णा पे पूर्ण श्रद्धा रखना, पूर्ण विश्वास होना असंभव है। लेकिन योगेन योगेश्वर अनुव्रतः, जो लोग अनुव्रत हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सिर्फ वो ही योगेश्वरम, वो ही योगेश्वर कृष्णा के लीलाओं को समझ सकते हैं, उन पे श्रद्धा कर सकते हैं। अब आप देखिए, सुदैवादिनेषु कामेषु, तो जैसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, और जो इसको तत्व से जानता है वो त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को दोबारा छोड़कर दोबारा जन्म नहीं लेता। तो जो मेरी क्रियाओं को, मेरी लीलाओं को तत्व से जानता है। फिर बताते हैं कृष्णा की भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्व,
सिर्फ मेरा भक्त ही मेरी लीलाओं को तत्व से सत्यता में जान पाता है। अब आप देखिए, तो जो भक्त नहीं है वो कृष्णा की लीलाओं को कभी नहीं समझ सकता, जो यहां पर इस श्लोक में उद्धव जी बता रहे हैं। क्योंकि कहते हैं आत्मवत मन्यते जगत। तो एक बार क्या हुआ कि तीन दोस्त थे, और तीनों जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटी क्लास में, छोटी कक्षाओं में, तो उसमें से दो जो मित्र थे वो बहुत ही सफल थे। वो कक्षा में अग्रणी थे, प्रथम आते थे। लेकिन जो तीसरा मित्र था वो फिसड्डी था, वो ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। तो फिर जो ये दो मित्र थे, कुछ समय के बाद स्कूल से ये लोग सब निकल गए, सब अपने अपनी दुनिया में लग गए। तो कई सालों के बाद उनकी इच्छा हुई मिलने की। तो सारे कक्षा के जितने भी विद्यार्थी, सब लोगों ने एक सभा बुलाई और सब लोग मिले उसमें। तो वो जो दो मित्र जो अग्रणी थे, जो प्रथम आते थे, वो तो मिले, लेकिन तीसरा मित्र नहीं आया। तो बात चल रही थी तीसरे मित्र के बारे में सबके बीच में कि अरे तीसरा मित्र हमारा आया नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे वो तीसरा वाला, जो तुम्हारा जो तीसरा मित्र था, वो तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। तो अब ये जो दो मित्र थे, इन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कभी इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। तो एक दो तीन उसमें से कई सारे मित्र थे एक साथ। तो एक और मित्र आके कहता है नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा है, मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट के जो जजों में उसका नाम आता है। तो फिर इन दो मित्रों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उस नाम के तो कई लोग होंगे दुनिया में, तो कोई जरूरी थोड़ी कि उसी का नाम है। फिर किसी मित्र ने आके बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका पूरा नाम देखा है, उसके उसके सरनेम के साथ। तो सबने बोला अरे तो ये नाम और सरनेम वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो वही मनुष्य है। फिर किसी ने आके बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसको मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे बैठे हुए, जज के जज की कुर्सी पे बैठे हुए। तो वो दोनों बोलते अरे वो तो कोई नाटक हो रहा होगा, उसमें बैठ गया होगा, ऐसा नहीं है, वो नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट जज। तो आप देख रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जज बन गया। तो कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सभी मूर्ख हैं। आत्मवत मन्यते जगत। मूर्ख सोचता है कि इस दुनिया में सभी पागल हैं, सभी मूर्ख हैं। तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं पहले पंक्ति में, दैव अधीनेशु कामेशु दैवाधीन स्वयं कुमार। तो सभी लोग संयमित हैं, सभी लोग नियंत्रित हैं माया के द्वारा। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो खुद स्वयं नियंत्रित हैं, वो सोचते हैं कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो नियंत्रित ना हो और पूर्ण मुक्त हो, भगवान की तरह, कृष्णा की तरह। तो उन्हें इसमें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं पूरी तरह नियंत्रित है। तो क्योंकि उनकी इंद्रियां मुक्त नहीं है, उनमें वो हर जगह से नियंत्रित है, तो उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि कृष्णा जो है वो पूरे विश्व को नियंत्रित करते हैं। वो मान ही नहीं सकते। तो ये कौन मान सकता है? जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होगा, जब तक कोई कृष्णा का शुद्ध भक्त नहीं होगा, वो कभी भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाओं का एक अंश भी समझना एक साधारण मनुष्य के लिए, जो भक्त नहीं है, उसके लिए असंभव है।
इसीलिए कृष्णा की लीला को वही समझ सकता है जो कृष्णा का शुद्ध भक्त है, और कोई नहीं समझ सकता। जो कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में, भक्त्या मामपि जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि सिर्फ मेरा भक्ति मुझे तत्व से जान पाता है। अब हम आते हैं 24वें श्लोक पर। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुर् भगवन्मतको वेदाः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुर् भगवन्मतको वेदाः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Once upon a time, the great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendants of the Yadu and Bhoja dynasties, and thus, as desired by the Lord, the sages cursed them. अब आप देखिए, अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर बता रहे हैं उद्धव जी, एक समय की बात है जब कई ऋषि मुनि क्रोधित हो गए यदुओं के क्रीड़ा से, और भगवान की इच्छा से उन्होंने इन यदुओं को श्राप दे दिया। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर्, पुर्याम का मतलब हुआ द्वारकापुरी, तो पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर्, कदाचित का मतलब एक समय था जब क्रीडद्भिर्, क्रीड़ा, क्रीड़ा कर रहे थे ये लोग, यदु लोग जो थे, कृष्णा के बच्चे, मतलब कृष्णा के पुत्र और उनके जो लोग थे, वो लोग सब क्रीड़ा कर रहे थे। तो यदु भोज कुमार गए। तो यदु भोज कुमार गए, तो जो यदु लोग थे, जो यदु लोग थे, जो आ, भोज जो राज्य था उसके जो लोग थे, यदुओं के जो लोग थे, वो लोग सब यदु भोज कुमार गए। तो ये लोग सब जो थे, ये लोग क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो जब खेल रहे थे तब क्या हुआ, कोपिता मुनय शेपुर, खेलते खेलते इन्होंने मुनय शेपुर, मुनि लोगों को, यानी वहां जो ऋषि थे, उन लोगों को कोपिता, कोपिता मतलब क्रोधित कर दिया, गुस्सा कर दिया। फिर क्या हुआ, भगवान मत को विदा, लेकिन वो क्रोधित क्यों हुए, भगवान की इच्छा से। भगवान मत मतलब
भगवान की इच्छा से क्रोधित हो गए वो लोग, कृष्णा की इच्छा से वो क्रोधित हुए। अब आप देखिए, तो यदु जो लोग हैं वो स्वयं कृष्णा के वंशज हैं, कृष्णा के पुत्र और पौत्र हैं। वो लोग कैसे साधु संत को प्रति अपराध कर सकते हैं, या वो साधु संत जो कृष्णा के राज्य में रहते हैं, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो कैसे यदुओं का अपराध ले सकते हैं? तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है कि भगवान मत को विदा। तो वो लोग भगवान के इच्छा से ये हुआ, वो कृष्णा की इच्छा थी कि इस तरह से हो, क्योंकि कृष्णा यदुओं के बिना नहीं रह सकते। अब यदुओं को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता तक नहीं हरा सकते, तो उन्हें भला कौन मार सकता है? तो यदि उन्हें भगवान के धाम वापस जाना है तो वो भगवान की इच्छा से होना है, कोई और कुछ नहीं कर सकता इसको। तो कृष्णा, कृष्णा तो वही कह रहे हैं, भगवान मत को विदा। तो कृष्णा की इच्छा से ये जो यदु जो थे, इन्होंने साधु संतों, वहां पे जो ऋषि मुनि थे, उन पे, उनके प्रति अपराध किया खेलते खेलते, और उन्होंने इनको श्राप दे दिया यदुओं को। ठीक है। तो इसीलिए, और इससे, इस लीला से कृष्णा क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस लीला से कृष्णा ये बताना चाह रहे हैं कि कोई कितना भी महान हो, यदु ही क्यों ना हो, लेकिन यदि शुद्ध भक्तों का श्राप लग जाए तो कोई नहीं बच सकता। इसलिए मनुष्य को बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध न हो। कृष्णा के प्रति अपराध कृष्णा सह लेते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध कृष्णा कभी नहीं सहते। बहुत ध्यान ये होना चाहिए, कभी भी शुद्ध भक्तों के प्रति हम अपराध न करें, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखें। अब हम आते 25वें श्लोक पर। ततः कतिपयैर्मासैर् वृष्णिभोजान्धकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। ततः कतिपयैर्मासैर् वृष्णिभोजान्धकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। A few months passed, and then, bewildered by Krishna, all the descendants of Vrishni, Bhoj, and Andhaka, who were incarnations of demigods, went to Prabhas, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद कृष्ण की इच्छा से यदु लोग, जो देवी देवताओं के अवतार थे, वो प्रभास को गए, जहां पे उनकी अंतिम लीला होनी थी। जबकि जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो द्वारका में ही रहे। अब आप देखिए, तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार जो यदुवंश के लोग हैं उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, और इस श्राप का प्रभाव से ये लोग सब कुछ महीनों के ही पश्चात प्रभास को गए, सारे जो यदु थे वो लोग। क्योंकि ये कृष्णा की लीला, कृष्णा की इच्छा का ही भाग है कि कृष्णा ने ये इच्छा की थी। तो कह रहे हैं ततः कतिपयर मास है, मास का मतलब महीना। तो कुछ महीनों में वृष्णि भोजांधकादय ययुः प्रभासम समहृष्टा, तो ये लोग सब प्रभास की ओर गए। रथैर देव विमोहिता, अपने अपने रथ में गए। देव विमोहिता, देव की के द्वारा विमोहित। देव कौन है? कृष्णा। तो कृष्णा की इच्छा से ये सब कुछ हुआ। तो इस जगत में कृष्णा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ कृष्णा की इच्छा से होता है। कई बार लोगों को लगता है कृष्णा की इच्छा मतलब
कि कोई दुख नहीं आएगा जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो देखो, अपने ही शुद्ध भक्तों को कृष्णा श्राप दिलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है, उसका कोई तो कारण बनेगा। यदु लोगों को कोई और तो छू भी नहीं सकता था। तो यदि कृष्णा, यदि यदु लोगों को मृत्यु को प्राप्त होना है तो उसका कोई तो कारण बनेगा। तो कृष्णा अपनी लीला से ये दिखा रहे हैं कि चाहे वो यदु ही क्यों ना हो, शुद्ध भक्तों का श्राप तो किसी को भी लग सकता है। दूसरा कि कृष्णा की कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि भौतिक दृष्टिकोण से हम सदा सुखी रहेंगे, नहीं। कई बार कृष्णा में दुख भी देते हैं, शुद्ध भक्तों को ही देते हैं, ताकि उस दुख के कारण वो सदा भगवान को स्मरण रखते हैं। और यहाँ तो यदुओं को मृत्यु प्राप्त होगी कृष्णा की इच्छा से। कृष्णा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और विशेषतः शुद्ध भक्तों के जीवन में तो कृष्णा का स्वयं प्रभाव होता है। कृष्णा स्वयं नियंत्रित करते हैं उनके जीवन को। साधारण मनुष्यों का उनका कर्मा जैसा होता है, लेकिन शुद्ध भक्तों के जीवन को पूर्णतः कृष्णा अपने नियंत्रण में रखते हैं, और उनके जीवन का सब कुछ कृष्णा की इच्छा से ही होता है। दुख हो या सुख, सब कृष्णा देते हैं, और कृष्णा की इच्छा से शुद्ध भक्तों का जीवन चलता है। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं। आज ये अपने सत्र को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।